प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है वाटर एज ए सॉल्वेंट। वाटर एज ए solvent. An important property of water is its ability to dissolve many substances. प्यारे बच्चों अख खास युस प्रॉपर्टी आबच खसूसियत आबच क्या अमिच एबिलिटी कि यह कर डिजॉल्व many substances. यह चीज पानस मज श्रपरावान यानी कि डिजॉल्व कर यह बड़ बात प्रॉपर्टी। When water evaporates to form cloud, it is a pure form of water. Yel water evaporate gais, yel esi water evaporate gais, yeh ach banan clouds. Kya ach banan clouds? Use any cloud banan emukchu. This is the pure form of water. Yeh is a pure form of water without any pollution. Kah pollution is gunjaish asa. Yeh pure form of water. But when it falls as rainwater, many gases from air dissolve in it. Magar, ये clouds pat root बना अमन ये root के shape मज बोन ये आब आसान चु अत airs मज अत करा काम वारिया gases अत मज अत dissolve गसान अत आबस मज. After falling on the ground, it comes in contact with several minerals and salts and dissolves some of them. Mayeli grounds पे ज़मीनस पे वातान यह आब अम पे यह रुद आब अम पे अत कंटैक्ट गसान वारियाहन मिनरलन सत वारियाहन साल्टन सत यम जन मेच मज आसान तो नम जन अत मज डिसॉल्व हेकान गजित. Hence it is called a universal solvent. तवे अत वनान वाटरस यूनिवर्सल सॉल्वेंट यानी कि युस तह कह चीज सह पानस मज श्रपरावान पानस मज दिवान तथ डिसॉल्व गसन. Large water surfaces like rivers, lakes and oceans are in direct contact with atmospheric air. Agar is wucho bad namzan large water surfaces namzan asan bad water surfaces khas kar rivers atmas yaman lakes yaman to oceans yaman yaman has kam kya chu yam direct contact ihund asan chu atmospheric air सत यानी कि atmospheric air अत direct contact. The gases like oxygen and carbon dioxide are soluble in water. अगर अस वुचो gas की खास कर gases like oxygen and carbon dioxide नमजन they are soluble in water. यम soluble आसा आबस मज हेकान रलित गलित अत सत. It is only the dissolved oxygen which helps aquatic organisms to survive in water. अगर अस वुचो यह डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन यह कि युस जन अमन यह आबी जानवर नम तन आसान खास कर फिशेस ये मज वुचान फिशेस या बे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स नमन मज यमन स्पेशल ऑर्गन्स तमन वन गिल्स यम मदद कर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन हासिल करनस मज गो यानी कि वाटर यह यूनिवर्सल सॉल्वेंट. Aquatic plants use carbon dioxide dissolved in water for preparation of their food. तो नम जन aquatic plants तम करा काम तम करा dissolved carbon dioxide युस जन आबस मज आसान सह इस्तेमाल करान. Aquatic plants अगर अस वुचो aquatic plants तम करा काम they use carbon dioxide which is dissolved in water. तम कर कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल एक्वेटिक प्लांट्स युस कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व गुमुत आबस मज फॉर द प्रेपरेशन ऑफ दियर फूड यानी कि फूड प्रिपेयर कर तम फूड प्रिपरेशन खतर जरूरत एक्वेटिक प्लांटन कार्बन डाइऑक्साइड युस डिजॉल्व. The solubility of gases in water decreases with the increase in temperature. वह अगर अस वुचो solubility कमन हज solubility of gases अगर अस वुचो gases कित कन soluble अत आबस मज गसान यह डिक्रीज गसान with increase in temperature. Increase अगर गछि temperature तो decrease छु गसान solubility. Decrease छु गसान solubility of gases. Often during the summer
fish in shallow ponds die. अगर अक्सर वुचो मौसम गर्माहस दौरान गसान कम यम गाड़ नम जन आसान नम जन नागन तमन तालाबन मज आसान नम जन कम आब तिम गसान कम तम मरान अत समर सीजन दौरान तिकाज टेम्परेचर हरान तिमन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन अत आबस मज रोजान कि the water in the ponds becomes hot due to summer heat. यमन पॉन्डन मज गसान कम यमन मज आब यह जन यह बना हॉट नतीज नेर अम समर हीट सत तो तम सत तम सत गाड़ हेकान भरित एज अ रिजल्ट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन dissolved in water is reduced and fishes die. अम सत गसान यह अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आबस मज डिजॉल्व गमुत यह रिड्यूस गसान तो गाड़ अम सत मरान. Water as a universal solvent, using water as a solvent poor ice. But such a topic is water cycle in nature. Water cycle क्या आसान कुदरतस मज अगर अस वुचो water cycle छु क्या कित कना छु गसान water cycle. Have you ever seen a river or a lake or a sea? अगर तो वुचमुत आसो जान दरियाव अक या अख झील अख या अख समंदर. The water from the surface of these water bodies evaporates continuously. यमो युथि गर्म छु आसान युथि ताप छु करा continuously छु गसान कम यम वाटर बॉडीज छु यमो पेट छु वाटर evaporate गसान बह के सूरत मज वाटर वेपर हंद सूरत मज द वाटर वेपर rises up यम वाटर वेपर्स नम जन छु गसान यम छु rise up गसान वाटर वेपर्स rises up यम छु खसा हेर को. The temperature goes down as we go higher and higher. Yuta hurkun, the higher you go, the cooler it is. It can zan pranay kahawa chi. The by yuta hur kasan chum water vapors. Temperatures yuta down gasan. When the air containing water vapor cools at upper altitudes, yeli air usan yatmas water vapors shasan cool gasan cha. At here yeli thadis kasan cha altitudes pe the water droplets are formed. Tem pach water vapor bana water droplets. Youth even water droplets banai. The water droplets adhere to the dust particles which are present in the air. Namzan water droplets gasan dust particles rele. Namzan at airs mojud asan. The group of water droplets along with dust particles forms clouds. Ye water droplet and group asan plus dust particles. Group of water droplets. The dust particles together they form clouds. Clouds. The clouds are moved from one place to another place by wind. Clouds moment they move from one place to another but through wind. How is it? When water droplets in the cloud come together, water droplets cloud must they form drops of water. Drops of it. These drops of water are heavy and they fall as rain. Water droplets heavy. If heavy banai, bana rain. Thus the cycle goes on and is called the water cycle in nature. Ethakanashi cycle rain il pupon go be water bodies in mas. Water bodies, khaskar as rivers, lakes, oceans. Water bodies is means Yet Jamash Beju Gasat, Garmas, tops, water droplets beneath, water vapors beneath, Natish Nera, Kasa, Bay atmosphere as much, the touch water droplets, Mushrala, dust particle inside, a group of dust water droplets plus dust particles, clouds, clouds, exhibit big through wind paka, Natish Nera. At Utah, Hur Casa, Utah Toriar at Gasa, Natish Nera, clouds banama, Tum heavy Casa, Tamuch bana
आब कतर तम सोई आब कतर बना पेवान रूद ज़मीनस पे तो ये बे ज़मीनस पे पे यह रूद अत बे इवापरेशन वाटर बॉडीज़न मज ग नतीज नीरान बे वापस वाता गो यानी कि साइकिलिक नेचर अमुक अत वन यह सो गो वाटर साइकिल इन नेचर तो मे पूरा मे तह आमुत समझ थैंक यू।